जी अस्सलाम वालेकुम। जो जिसका सोचा था, जिसका डर था, वही हुआ। पाकिस्तान लॉस फ्रॉम यूएसए। हमें कहते हुए ही कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। यू नो, फॉर मोस्ट ऑफ द गेम यूएसए आउटप्लेड अस। लास्ट के 2 ओवर्स में लगा था कि शायद हमने सैल्वेज कर लिया है, बट अगेन वाजंट एनफ। सुपर ओवर तक बात गई। आप सबने मैच देखा। पाकिस्तान लॉस द सुपर ओवर। सो क्या थॉट्स हैं जनाब? आसिफ और मुदस्सिर क्या कहेंगे ओवरऑल, बिग पिक्चर? Let me start. Kya. So obviously, look, today is a very dark day in the history of Pakistan cricket. And before I say anything, congratulations to the USA. They deserve to win. They played better than us on this day. I, I'm going to start with a little joke because if you can't, you have to laugh if you're not going to cry about what happened today. There's a man who is very, very devoutly religious, and there was a flood in his area. So they were evacuating his city, and he said, "I'm not going to leave. I have faith in God because I've been such a good, churchgoer, Muslim, whatever." So the water was coming up, so he sat on the roof, and a man came on a boat, and he said, "Come, let me help you leave." He said, "No, no, no. I have faith in God. I'm going to be okay. I'm a very, very religious person." So he left. Was stuck. Then the water then came up to his chest. So he's obviously struggling. A helicopter came, dropped a ladder. They said, "Come." He said, "No, I'm not going to come because I have faith in God. I'm a very devout person, so I'm not going to come." Finally, the water's up to his chin, and an airplane comes, and they hang a ladder down, and they say, "Why don't you come? We can rescue you." He said, "No, no, no. I know that my God is by my side. I've been very religious." And then he ends up drowning. So he's drowning. He goes to heaven, the pearly gates or whatever, Rayan, whatever you want to say. He meets an angel, and he says, "I've been so religious. Why didn't you come and save me?" They said, "Well, we sent you a boat, we sent you a helicopter, we sent you a plane. What do you want us to do?" Right? So the relevance to that is on this particular day, the United States cricket team out-hungered, they out-desired, they out-batted, they out-fielded, they out-captained, they outplayed Pakistan every aspect. They were the better team on the day. All of that having been said, we found ourselves in a position with Huddersfield bowling at the end, 15 runs needed in 6 balls. We totally could have done 12 of this. 3. Then he needed 12 of 12 off 3. of three. Then there was a catch that Shaheen Afridi, if he had taken, would have been a dot ball. We would have won by 1 run. Didn't happen. They needed 5 runs in 1 ball. We had a player admit off. I don't know why, but whatever. All of that failing. Then you still get a super over. Now, this is when you say, all right, we've had so many chances. Now it's time for us to show we're a real team and this is not that, of that level. You buck up, you put everything together. And yet, in that super over, it was such an utter disaster. And I feel like that was a summary, a microcosm of what Pakistan cricket has become. Not just the wide balls. I mean, have you ever seen batsmen scoring so many byes on wide balls, overthrows, yelling, just total disaster and chaos? They scored 18 runs with only one boundary. So that to me, and it just shows that we had the opportunity and we just let it go. And I want to rewind a little bit to the buildup. The USA had practice matches against Bangladesh. They were serious. They were hungry. In contrast, Pakistan was the last team to arrive in the United States. They went for masjid fundraisers. They went to a rodeo, shot videos. They were found apparently eating out late at night at Bandu Khan, going to people's houses, having late night dinners. This team, to me, and that's the thing. If they had tried their best, everything was, they put their best foot forward and you lose, you say, all right, tip your hat. But it's such a non-serious, unserious team. It reeks of the stench of mediocrity and unprofessionalism, and that is unacceptable. And you can look at so many things and blame one thing or the other, but it's a collective thing. You can look at Babar and say his lack of composure, his captaincy, his stop-start innings. Sure, that's true, but he's not the only one. You can look at Rizwan and say the overthrows when he was in the super over, but so many more. You can look at the shots that FAKHAR and Osama and Shadab played. Honestly, 2 of those shots I think were on with the fine leg in, but the execution was poor. They deserve blame. Azam Khan, who has failed on so many different levels, and yet still the board has put faith in him to go and do his job in the middle order. After all of that, you can't even play with a straight bat on the first ball. I mean, that's just, you can't do that. Then Amir, Muhammad Amir bowled such an amazing penultimate over. Then you come in, most experienced bowler on this side, you bowl these wide balls. Shaheen Afridi dropping that catch of Harris that would have been the game, set, and match. Shadab bowling as we know, even though he batted well. So look, for me, I think in the history of Pakistan cricket, and this is a big statement, I would say in the history of Pakistan cricket, 70 plus years,
This is rock bottom. This is as bad as it gets. This is the worst thing ever. But with all that having been said, it's just the first match. And Yeah. they do have an opportunity to lift themselves up. It is not over. Now, can they do it? Are they serious about it? That's what we're going to see. This is when you dig down and see it. You know, for me, I'll tell you what, honestly, with what we saw today, it's easier to not care when you see that the players don't care. We care, we put our hearts and soul into this team. And when they show that their attitude, that they just don't give a crap, you know, then I'm like, why should I give a crap? That's the thing. They need to show that they care and put their best foot forward. That's the thing. You lose, you lose. Winning, losing happens. It's the way that they went about it, the attitude. For me, that's what it was. But again, there's time. You can absolutely redeem yourselves. Hope that they do. But honestly, you know, I'm not holding my breath. Yeah, I mean, two days का rest है, फिर you're going to a different location. It's a tricky pitch. Yeah, you can never rule out Pakistan, but you know the odds are really stacked up against us now. मुदस्सिर, आपके क्या थॉट्स हैं? आप तो शायद नाजरीन को पता ना हो, बट ये आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच भी देखने के लिए जा रहे हैं। काफी आपने खर्चा वगैरह भी उठाया उसका, तो क्या वो यार ट्रिप अभी तक ऑन है? ये अभी तो तक? अगर जीते तो फिर बताएंगे ना, पहले नहीं बताना था ये। अच्छा। छुप के जा रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। यार ये पहली दफा नहीं हुआ है इस टीम के साथ। ये पहले भी खैर अपसेट्स होते हैं क्रिकेट में, हर वर्ल्ड कप में होते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका ने बहुत बुरा चोक किया है। उससे पहले भी कभी इंग्लैंड हार गई आयरलैंड से, कभी वो स्कॉटलैंड से। इंग्लैंड बहुत हारती है, कभी स्कॉटलैंड से हार गया, कभी किसी से हार, नेदरलैंड से भी हारे में, हाँ। नेदरलैंड से हार गया। तो दिस इज नॉट न्यू। मसला हमारी टीम में डिफरेंट चल रहा है। हम आई डोंट थिंक कि हम इस पे इनको एक्सक्यूज करते जाएं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में। और मसला ये है कि हार जीत होती है क्रिकेट में, मगर आप कोई लगता है कोई रूट एनालिसिस ही नहीं हो रहा इस टीम का। कि ठीक, आसिफ भाई सही कह रहे हैं, मुझे नहीं अफसोस हुआ आज, क्योंकि जब सीरियस ही नहीं है ना, प्लेयर सीरियस है। हमें सबको पता है अमेरिका में क्या हो रहा है, डेलिस में सोशल मीडिया में ये लोग, कभी कोई कह रहा है 10 बजे तक कोई प्लेयर दिखाया, किसी को रात के 2 बजे भी दिखाया। मतलब भाई आपको चंदे करने हैं, खाने खाने हैं, वर्ल्ड कप खत्म करो, आप वेकेशन लो महीने हम्म। की। ये एक तो आए भी सबसे एंड में ना वो, और फिर मैच सबसे एंड प्रैक्टिस में भी नहीं आए की, हैं। और इंडोर बारिश एग्जैक्ट, होती रही, तो और फिर अब। दे आर नॉट सीरियस। तो मैं सिर्फ इंजॉय करूंगा, अगर जीत गए तो ठीक है, मगर आई एम नॉट फीलिंग बैड एट ऑल। दूसरी बात ये कि हारी भी अमेरिका से, विच इज अ होम टीम टू, आई थिंक इट्स गुड फॉर क्रिकेट, क्योंकि उसमें भी ये पाकिस्तानी इंडियन ही खेल रहे थे और वेस्ट इंडियन, तो इट वाज अ कंबाइंड टीम। तो मुझे कोई इतना वो नहीं हुआ कि आई एम डिसहार्टेड और एनीथिंग। नहीं, होम टीम तो है, लेकिन अगर आप एक एवरेज अमेरिकन को, हम अमेरिका में तीनों बैठे हुए हैं, आप पूछो तो उसको तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है। ये तो सिर्फ आपका नहीं पाकिस्तानी इंडियन मगर डायस्पोरा को ही पता है। सही है, राइट। मगर बात हो रही है ना अफसोस की, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये दिस इज अ जोक, और ये कब, ये 2 साल से हो रहा है। खैर मैं बताता हूँ। जैसे यार देखो, अब मैंने उस दिन भी हम ये बात कर रहे थे, प्रॉब्लम हम कहते हैं 4 पेसर खिला दो, इन चारों में से सुपर फिट है ही नहीं कोई यार। आज स्पीड गन आ रही थी गेम में, यार ये शाहीन 150, नसीम 148, 145, हारिस रऊफ यूज्ड टू बी 155, आमिर 11, इनमें से नो बडी इज एट देयर पीक बॉलिंग राइट नाउ, ठीक है ना। तो बॉलिंग वीक है। अब करना क्या था इनको कि इमाद वसीम से हमें नजर आया था कि यार वो थोड़े रन रोक रहा था, फ्लड गेट्स। इमाद इसने सुपर ओवर से पहले उसने, आमिर ने भी थोड़े रोके। तो करना ये चाहिए था कि भाई बैकअप रेडी करते, अब्रार को खिलाते। जब पिटना शुरू होते हैं ना, मैं उस दिन हम यही बात कर रहे थे कि दिस टीम कैन नॉट डिफेंड, और आज भी वो 3 बॉलों पहले नहीं डिफेंड कर पाए ना। तो ये दिस इज नथिंग इज न्यू, ठीक है ना। तो वो हम इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे कि भाई आप थोड़ी चेंज करो टीम में बॉलिंग। अब नाउ अब अब्रार इंडिया के खिलाफ तो नहीं खेल सकता ना, दिस गेटिंग टू लेट। और फिर दूसरा ये हुआ है बैटिंग में। अब यार ये दिस इज अ प्रॉब्लम के अब सब बाबर को ब्लेम कर रहे हैं। बाबर ने सेटअप कर दिया था गेम, वो आउट हो गया तो हो सकता है 180 भी पाकिस्तान कर रहा था, 160 170। इफ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ टीम इज नॉट अ बैड स्कोर, अगर इफ यू फील्ड वेल एंड बोल वेल। अब तुम देखो ओमान ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, वो गेम सिमिलर था। ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब थी, वार्नर स्टेड एट द क्रीज विद स्टोइनिस, दे स्कोर 160 और दे रैप्ड इट अप। स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ मार मार के 10 ओवर में 90 रन कर दिए। तो जो टीम्स है ना T20 में थोड़ा नैरो हो जाता है। इफ यू स्टे डिसिप्लिन, इफ यू आर फिट,
it's hard to beat beat a big team. एक अपसेट हो सकता है हर बड़ी टीम का। और फिर जो होप फाइन कि मार्जिन है, सॉरी आपकी हाँ, बात करें, जो फाइन मार्जिन है, आप उनकी फील्डिंग एफर्ट देखो, जिस तरह रिजवान का कैच उसने स्लिप में पकड़ा है, एंड yeah, कॉन्ट्रास्ट दैट विद इफ्तिखार का जो लैक ऑफ अटेम्प्ट था कि बॉल गुजर रही है और आप परवाही नहीं करते। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि अगर आप उस वक्त I know. रिजवान ना आउट होता तो वो बिल्ड करके इनिंग को ले जाता। बट वही है कि दीज थिंग्स तो मैटर, देन फील्डिंग एफर्ट, ओवर तो थ्रोज हो रही हैं। यार मेरी एडवाइस ये है कि जस्ट डोंट एंजॉय, गो विद द फ्लो। जीत गए तो ठीक है, ज्यादा डोंट, नो नीड टू स्वेट ये, क्योंकि दे आर नॉट सीरियस ना। तुम अगर, मैं आज किसी से मजाक कर रहा था, तुम अगर म्यूट करके हाईलाइट देखो ना, तो पाकिस्तानी टीम मिनो लग रही है, क्योंकि फिट ही नहीं है टीम। यूएसए की टीम फिट कितनी थी, सारे यार प्लेयर्स, तगड़े प्लेयर नजर आ रहे हैं यार। अब वर्ल्ड कप के बाद बात करेंगे कि यार पहले लिस्ट बनाओ कि इस मुल्क में भेजा किसके अंदर है और फिट कौन है। मेरे ख्याल से लिस्ट ही 5-6 लोगों की निकलेगी। उसमें ब्रेक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ अभी स्क्रीन पे, आमिर जमाल और नियाजी। पहले बंदा फिट तो हो, उसको तो आप लगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है यार। आधी टीम तो एथलेटिक ही नहीं है ना इस वक्त। खैर पोस्ट मसला वर्ल्ड ये है कि कप जब हमने टीम बनाई थी बैठ के इसी चैनल पे, क्या। तो ये टीम मोरलेस वही है, इक्का दुक्का। चलो हमने हाँ कहा था कि जी आमिर जमाल को होना चाहिए, आमिर जमाल नहीं हुआ। आगा का हम कह रहे थे कि शायद आगा हो जाए, बट इट्स नॉट हाँ लाइक बिल्कुल ही ठीक है, उन्होंने बुरी टीम खिलाई है, टीम यही चलो थी वैसे। ठीक है, आई एग्जैक्टली एग्री विद दैट। मगर एक एक प्लेयर से बहुत फर्क पड़ता है। अगर अगर मेरी प्लेइंग 11 होती है अभी आज, उसमें अबरार खेल रहा होता, अभी से नहीं 4-5 मैच पहले से ट्राई कर रहा होता। मुझे नहीं पता अबरार कैन इवन परफॉर्म इन T20। अबरार होता, हिमाचल अनफिट हो गया, आमिर जमाल होता है, 4 पेसर में आमिर जमाल बनता ही बनता है। क्योंकि तुमने सबसे अच्छी पावर हिटिंग हम लोगों ने देखी कब एक साल में, वो ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल नहीं की हुई है ना। बाकी तो पाकिस्तान में पावर हिटर भी नहीं मिल रहे हम लोगों को। आमिर जमाल होता है, नियाजी फिट था, उसको 2 गेम मिले, खैर वो तो फ्यूचर का था प्लेयर। आगा सलमान इज अ बिग मिस, मैं कब से कह रहा हूँ। बल्कि यार I've said it also शुरू हम से लोग अब इन पिचों पे छक्के नहीं लग रहे यार। अच्छा एक बात बताओ, ट्रेवल रिजर्व कौन है पाकिस्तान को ऑफिशियल अभी इस वक्त? कोई भी नहीं है। आगा सलमान ही है ना? कोई आया हुआ उसके साथ, आई डोंट नो, क्या कोई नहीं, साथ ट्रेवल आए भी हो। रिजर्व, ऑफिशियल ट्रेवल रिजर्व है मेरे ख्याल से वो। अच्छा, तो फिर मतलब वही उसके होंगे साथ जो वहां पे जो इंग्लैंड में थे, बिकॉज वो प्रॉक्सिमिटी वाइज अब्बास भी करीब है। आफरीदी आई थिंक रिजर्व नहीं, में है वो। अब्बास तो 15 में है ना, अब्बास इज इन हाँ 15। आई थिंक हाँ वही है आपके न्याजी और yeah आगा सलमान ही है। एग्जैक्टली। तो आई हाँ थिंक एक को किसी को भेज दें वापस। मुझे नहीं लगता आजम मेंटली इसको इतना डिस्टर्ब कर दिया है। एक आई थिंक आगा को बुला लें किसी को अनफिट करके। ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आजम का प्रॉब्लम हो गया अगर वो। आजम को आपने छक्कों के लिए किया हुआ, चलो आज आज फिर उसका गोल्डन डक था भाई। आप फिर उसको, अगर सुपर ओवर के अंदर कोई, हमें बेसिकली 3 छक्के चाहिए थे ना, 18 रन चाहिए, तो बेसिकली नीड 3 छक्के। तो एक बंदे को आपने छक्के के लिए रखा हुआ है, तो फिर आप उसको छक्के के लिए खिला ही नहीं रहे हो, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिम हैविंग इन द टीम दैट। वो दूसरी एग्जैक्टली। बात ये है कि जो है you had a left arm bowler bowling the super over, and Fakhar, who's your या lefty, who honestly would have had a better angle, didn't face a single ball in the super over. यार उससे पहले आप ये देखो कि super over से पहले there was almost a timeout because they had no idea who they're sending. या Pakistan didn't even send the team out. It's like they don't even plan. It's like वो बैठ के चाय पी के सोच रहे कि हाँ अब क्या करें. I mean, there's such a lack of discipline and professionalism. It's shocking. यार I ये honestly, बात, we can get our friends and we will be more professional. We might lose just as badly, but there'd be no shame in it because at least we put our best foot forward. We would not be so ill-disciplined. This was horrible. नहीं आपकी बात सही है। जब ओमान और नमीबिया का जो हुआ था सुपर Huh. ओवर, तो उस वक्त हम बैठ के हम आपस में यही बात कर रहे थे कि Yes. यार अगर हमारा कोई बात आती है तो हम लोगों में से कौन जाएगा। Huh. और हम अपना मतलब है, एंड देन बेसिकली वी वर सेइंग कि होपफुली चलो, इनको पता है कि यार इनके Huh. पास रोल क्लैरिटी है। बट आपकी बात सही है, तो रोल क्लैरिटी नहीं थी कि यार I शादाब mean, को हम I भेज रहे don't हैं। fault Amir being selected for that because he bowled an excellent penultimate या over. Okay, he bowled poorly in the super over. That absolutely. But here's the other thing: how do you keep getting buys on these wide balls? I mean, it was more schoolboy विलेज, cricket than I've ever seen before. इट वाज विलेज नहीं विलेज क्रिकेट यार। वो अगर जो तो आपने एक कट एक सॉरी, अगर आपने एक कटर्स करने हैं तो फिर आप हाँ, विकेट कीपर को आगे रखते हो ना, फिर आप कहते बिल्कुल. हो विकेट कीपर आगे आए। अभी वो सॉरी मुदस्सर, आप कुछ कह रहे थे। एक क्लिप नहीं वायरल हुई, एक बच्चे हैं, 2 बच्चों की टीम खेल रही है Yes, yes, एग्जैक्ट that is उसी। exactly what Pakistan was. एग्जैक्टली। Exactly. मतलब ये तो यार हम, ये तो जो मोहल्ले की क्रिकेट में भी 18 रन नहीं बनते भाग के यार। हाँ. 10 बन जाते हैं, 12 बन जाते हैं। एक चौका लगाया, मतलब दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये बकवास था यार बिल्कुल ही, इससे थोड़ी हारते मैं। And लोग where was Babar in the middle of all of that? I saw Amir yelling. I saw या Rizwan trying to direct things. Babar was just missing in action. या Where is the leadership?
Yeah, it's not बस वही about चीज है ना, लीडरशिप का भी जो आपने सत्यानाश कर दिया, वो हटाया उसको, फिर आपने शाहीन अफरीदी को बना दिया, फिर आपने आपस में फूट डाल दी उसको वापस बना के, exactly। यू नो। और वो पाकिस्तान में लोग शोर मचा रहे हैं, गहरी ने नहीं किया भाई, इस तरह कोचिंग नहीं होती। पिछले वर्ल्ड कप से पहले आप आर्थर को उठा के ले आए वर्ल्ड कप में, मैथ्यू हेडन आ जाता है, फिर गैरी क्रिस्टन, उन्होंने भाई सिर्फ they've only brought him to be a scapegoat, that's all. एग्जैक्टली, फिर कहेंगे ये इसको निकालो बाहर। अभी भाई टाइम तो दो उसको, 1 साल दो, 6 महीने दो, वो कोई अजीब यार। अच्छा चले मूविंग फॉरवर्ड, क्या देख रहे हैं आगे फ्यूचर में? ठीक है, वेरी शॉकिंग, स्टनिंग, आई मीन आई एम श्योर आप लोगों के वही सेंटिमेंट्स हैं, हमारा भी यहाँ पे देख के, स्पेशली हम लोगों ने तो टिकट्स भी लिए हैं कुछ ने। अब मैंने भी आयरलैंड की, मुझे तो हो रहा है कि पता नहीं आयरलैंड के गेम डेड रबर ही ना हो जाए कि उस वक्त तक। और मुदस्सिर आप भी जा रहे हो इंडिया के गेम के लिए, तो जब तक हम ऑफिशियली आउट नहीं होते, ऑब्वियसली सपोर्ट तो करना पड़ेगा। क्या देखते हो, यू नो, हाउ डू वी टर्न अराउंड द टीम? लड़के तो यही हैं बेसिकली। क्या कोई टीम कॉम्बिनेशन की Silence. आप बात करोगे? आजम वुड नीड टू सिट डाउन, इट्स मोर मैं देन द मैं टीम तो जा रहा हूँ, कॉम्बिनेशन एट दिस स्टेज। देखो मैं तो जा रहा हूँ सर्कस देखने, ठीक है, मुझे वहाँ कोई बॉलीवुड सॉन्ग मिल जाए कुछ, मुझे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं उधर शायद सुना है देसी खाना यार से। आप 1500-2000 डॉलर दे के अगर आपने बॉलीवुड के सॉन्ग हैं, मैं आपको सीडियां भिजवा देता हूँ बहुत सारी। भाई नहीं, I चाय think actually चाय वाय, Azam, चाय वाय सर्व होगी वहाँ पे, स्नैक्स मिलेंगे, आप दोनों टीम को देखोगे, और क्या चाहिए, बाहर टास्क करेंगे। I mean, Azam is the beneficiary of the fact that we don't have other middle order batsmen. I think that's the thing, you know. Usman, Saim, these are all top order batsmen. So, um, I, I, नहीं तो आप obviously, I'm going to like इमाद an को ले आओ ना Abrar, उसकी जगह, huh? इमाद को ले आओ। शादाब हैज No, डेमोन्स्ट्रेटेड Imad कि to मिडिल ऑर्डर में Lauge उसका क्या जगह। and Abrar should come in. Abrar needs to come in, and then वही बात है, it is these same. Now, here's the thing. Again, यही 11 बंदे, even who played today, are capable of brilliance and beating any team on their day. इंडिया को हरा That is सकते हैं, आई so मीन डोंट। mind-numbing. That is what makes you want to hit your head against a brick wall. But that happens like Eid ki Chand, you know? So maybe on Eid day you'll beat Ireland, maybe, you know? I don't know. But that's not, you know, that's not how you play professional sports, where you have this combination that has potential, and once every 2 years we come up with a great performance and we rest on that for the next 3 years. That's not how you do it. So it has to be these guys because that's all we have, right? And you just have to, you know, discipline, put your heads down, practice, and take every match seriously. I still think, shockingly, they took this match lightly. Even had to deal with when they played the USA, almost did. So it's the attitude, the mindset, and then you just put your best foot forward. I mean, you're playing against India. You know, this is, you know, it's not, we're not even in their stratosphere. और गॉड फॉरबिड अगर दोबारा हमें बैटिंग करने को इंडिया ने दे दिया, एक तो वैसे ही हाँ, हमसे पहले बैटिंग नहीं हो रही, ऊपर से वो पिच जो ऐसी है, आई मीन द हाँ. ओनली होप, लिटिल होप इज कि अगर टॉस हम किसी तरह जीत जाए, उनको बैटिंग कर दें और रिस्ट्रिक्ट कर लें, वरना तो बहुत मुश्किल लग Well, रहा you है know, the अनफॉर्चुनेटली। loss of Imad really hurts the balance of our batting lineup. You know, we went in a very thin batting lineup, and then we lost wickets quickly. That was the thing. And then Babar, you know, again, I got into some very heated discussions with some other people, Mudassir knows, earlier about Babar in the beginning, even when the wickets weren't falling, he had 2 and 7, then he had 7 and 22. He was very, his composure was not there. And I think that did force the batsman on the other end to try and take more risks, because everyone who's played cricket knows when you're batting with someone who's very slow, you feel like you have to do more. I think that prompted the FAKHAR shot. And again, FAKHAR deserves the इवन blame. उस्मान शॉट, Execution was terrible. But the fine leg was in, so the shot was on. Shadab, you know, someone said it was like a Saeed Anwar moment in the World Cup '99. You change your grip, you know, you have a loss of concentration. Shot was on, but the execution was terrible. So, but I do think that part of that was that Babar made up for it later on. You know, this is a dilemma we have in our batting, that we either have batsmen who bat quickly and get out quickly, or you have batsmen like Babar and Rizwan who start very slow and then make up the difference later. But if they fail, if they don't make up the difference, then you're stuck. And today it was a perfect storm where all the wrong things happened. The quick batsmen got out quickly. Our so-called anchors, our stable guys, didn't do what they were supposed to do, and so, you know, you end up where you are. At the end of the day, 160 wasn't bad. अभी तो Bowling अगेन, has to get blamed. Bowling has to get blamed. मेरा तो अभी तो 7 शादाब ने अच्छे रन बना दिए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो थे, देखो वरना तो शादाब it would और have been even worse। और शाहीन शाहीन ने जो 20-25 रन तो मार दिए। मुझे बैटिंग जैसे भी हुई,
अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया था कि हाँ बेटर टीम यू सेल्वेज ना, तो वो बैटिंग कर दी पाकिस्तान ने। जो एंड में मजाक हुआ है ना सुपर ओवर और आखिरी ओवर में, ये तो यार मैं क्या बोले उस पर। मतलब ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई विलेज क्रिकेट हो रही हो या कोई बी टीम हो, या आप कोई हाई प्रेशर गेम में चोक, साउथ अफ्रीका चोक हो रहा हो चलो किसी के खिलाफ, याद है यार वसीम वकार लोग 3-3 रन सेव करते थे यार, 3 रन। yeah So और आज भी is जाने it वाले is थे, they were doing the same thing until the very last 3 या balls 3 yeah. बॉलों में फिर वो कमेंटेटर ने बोला कि गुड ओवर सो फार, उसने कुछ शी yeah एडेड समथिंग, और अगली बॉल पे छक्का, वो फुल टॉस। और उसके बाद भी यार 5 रन चाहिए आपको आखिरी में, और वो जो बैट्समैन फेस कर रहा है वो ही वाज लेस देन रन अ बॉल, वो एक भी बाउंड्री नहीं मार चुका था। हाँ तो अब ये जो आप बॉलर्स की बात करें, व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दिस टू? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ यार कंडीशंस, नहीं या जस्ट नहीं दे नहीं नहीं पास ए सर, पीक? ये टीम फिट नहीं है। मैं तुम स्पीड गन मुझे दिखा दो कि कोई अपनी फुल पेस से लेकिन सिर्फ स्पीड की नहीं है, it's accuracy they एक्यूरेसी I think वैक्यूरेसी होगी आसिफ भाई, दे आर नॉट huh? बॉलिंग देयर स्पीड। But they're not bowling the speed, but they're also not bowling on target, right? You या know, No, it लेकिन doesn't matter how no, fast you bowl if you're bowling down the leg side, bowling wide. एग्जैक्टली It that's doesn't यार when mean you I say think that's when you अर्शदीप होगी ना सिंह पेस। की और सिराज की कौन सी स्पीड है यार, आप देखो। यार right. उसको अर्शदीप सिंह छोड़ और दो ना, सिराज की कौन सी? देखो हारिस रऊफ सीधा सीधा फॉर्मूला है। if Haris Rauf is not crossing 155 145 पे वो टेप बॉलर बन जाता है, ना स्विंग है ना सीम है, तो उसको सीधे सीधे मारेंगे ना जो बड़े प्लेयर होते हैं। हारिस रऊफ whenever he bowls well he has to click 155, उसमें भी कभी कभार पिट जाता था वो। और But शाहीन also he changes his pace. He didn't do any slow balls today. That's आई नो, from स्लो मगर बॉल्स के आई डोंट अलावा यार थिंक फुल टॉस मार दिया इनमें उसने दो। I आखिरी know. 3 बॉलों में 2 फुल टॉस मार दो आप, तो बात So खत्म हो जाती है। या I ही इज think नॉट Joe, clicking 155, I mean, way ठीक है, down. pace है. I think one of the features of our bowlers used to be, these fast bowlers, was they put the ball in the right spot. Their accuracy was spot on. You would not have bad balls. You know, it'd be so tight that you force a batsman to try and change his game just to manufacture runs. Ab lag raha hai ki in every over, just like I used to, my complaint with Hasnain used to be, you have 1 or 2 bad balls every over. They are incapable of staying accurate throughout. Maybe they had such great success early on, it got to their heads. They're Yeah. not putting, because clearly that shows they're not putting in the work. They're not putting in the work, you know? They just think, you know, they think it'll come naturally, and it doesn't. Even the best, again, basketball, the best NBA player, even now, shoots 100, 200, 300, 400 shots on off days. It doesn't just come naturally. You have to work if you're going to win. This is a very good lesson for any young cricketers as well. Just talent doesn't get you anywhere. You have to put in the work. These guys are talented. We know that. We've seen what they can do. They're not putting in the work, and it's showing in the results on the field. You know? इसकी सीधी मिसाल है, पिछले 4 साल में टेस्ट क्रिकेट मैं फॉलो करता हूँ पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया की देखते हैं। हाँ जो बॉलिंग पैट कमिंस टेस्ट में करता है ना, वो मुझे कोई बंदा दिखा दे पूरी दुनिया में, ठीक है ना, जो आप पाकिस्तान में खिला दो, श्रीलंका में खिला दो, पहली बात है कोई इतना फिट ही नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू बेंड योर बैक, जो वकार वसीम करते थे, पैट कमिंस हो गया, हेजल्ट हो गया। तो मैंने जो एक स्पेल देखा है ना पिछले 4 साल में किसी पाकिस्तानी का जिसमें जाती, वो आमिर जमाल का ऑस्ट्रेलिया में था, ठीक है। इनमें से कोई किसी में जान ही नहीं है बॉल करने की जो जो होनी चाहिए, या जिस तरह एंड्रयू फ्लिंटॉफ एवरेज था, मगर जब वो जान मारने पे आता था, यू कैन रिमेंबर हिज स्पेल्स, एंड्रयू फ्लिंटॉफ हो गया या पैट कमिंस करता है, स्टार्क कहीं से अपनी जान वापस लाता है नॉकआउट में, यू सी ही इज पुटिंग एक्स्ट्रा। आज भी तुम देख लो, हमें वो जान नहीं नजर आती प्लेयर्स में हमारे, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो फील्डिंग हो। ये ना कुछ गड़बड़ है कहीं, फिटनेस बिग इशू। 90 Fahrenheit temperatures also didn't help. मगर Do you अगली guys agree with me that this is rock bottom? This is the lowest point of Pakistan cricket ever? I think so. I Because think so. optics are bad. I mean, this is Yeah. just ridiculous. Yeah. My पता नहीं kids मेरे were trying to लिए explain to each other yes, how big of an upset this is, and they said essentially it's like the Pakistan basketball team beating the USA basketball team. That's what it's like, you know? It's यार उस तरह देखा जाए तो चलो कह सकते हो, लेकिन अगर आप लीडिंग अप टू इट हमें नजर आ रहा था, दे हैड बीटन बांग्लादेश, दे वर प्लेइंग इन देयर होम कंडीशंस, वो इन्हीं पिचेस पे these players play 60 T20 games in a calendar year. आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, आप सबसे एंड में आप आते हो यहाँ पे, आप कोई मैच आप प्रैक्टिस नहीं करते यहाँ पे, आप इवन बारिश की वजह से, दैट्स नो फॉल्ट, नॉट फॉल्ट ऑफ एनीवन, आप अंदर आप इंडोर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वो काउबॉय शूट आउट कर रहे हो, तो फिर
आई मीन यस इट इज, आई वोंट से कि मे बी रॉक बॉटम है कि नहीं है, बट बॉटम तो है। तो मैं जब आयरलैंड का हम 2007 में हारे थे और नॉकआउट हुए थे, मेरे लिए वो रॉक बॉटम था। फिर मुझे लगा कि जब हम जिम्बाब्वे से लास्ट वर्ल्ड कप में हारे हैं शायद वो रॉक बॉटम है, बट उसके बाद हम फाइनल में पहुंच गए। तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी अभी भी। नहीं, मैं आपको सिर्फ 100%. ये कह रहा था कि Yeah. मुझे कुछ पता नहीं कि इंडिया को हरा दें। आई मीन नहीं डिस्पाइट द देखो, लैक ऑफ Yeah. फॉर्म। मैं बता इसको रूल आउट तो कोई भी नहीं कर सकता, मगर ये कि मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो पिछले एक दो साल से जो क्रिकेट में लग रही है ना हमारी, कि बहुत ढीठपना चल रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप में जो प्रॉब्लम थी ना, हमें वही प्रॉब्लम वही हरकतें कैरी करते हुए आ रहे हैं। और ना चेंज नहीं देखते, वो एक इंसैनिटी है कि बस वी गोना कीप डूइंग द सेम थिंग इन एवरी गेम। एक जीत जाएंगे, फिर 3 हार जाएंगे, फिर जीत जाएंगे, मगर मजा नहीं आ रहा, पता है। वी नीड सम चेंज। Chalo, मजा तो उसमें you'ल go and win us the India match, inshallah. We go. वो चलें। मैं वैसे एक और पॉजिटिव नोट ये मैं आपको बता दूं कि लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर जो दो फाइनलिस्ट थी, एक फाइनलिस्ट जो इंग्लैंड थी वो अपना पूल मैच आयरलैंड से हार गई थी, और दूसरी जो फाइनलिस्ट थी पाकिस्तान वो जिम्बाब्वे से हार गई थी। राइट। होते हैं। और उससे पहले जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था सॉकर का, उसमें द चैंपियंस अर्जेंटीना दे लॉस्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया इन द फर्स्ट राउंड। सो आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू, कहते हैं ना So, वो so, क्लच ऑन so where is स्ट्रॉज। Zimbabwe now? They're not हाँ देखा even ना। good enough. They're not even good enough to qualify amongst these 20 एग्जैक्टली वो teams, and we युगांडा lost to them. उनको जो है हरा के So, आ गई है। सो uh, आई मीन ऑब्वियसली हम शुगर कोट तो नहीं I कर think the सकते, bar बहुत is बुरी is हालत है, तो एक बट बड़ा ये है कि फिर हमें अपसेट होप तो रखनी पड़ेगी। इसलिए भी बड़ा right. अपसेट कह रहे हैं, क्योंकि T20 में ना टॉप 10 टीम्स फिर भी बहुत कंपेटिटिव होती हैं। अफगानिस्तान तुम्हें पता है टॉप 10 में आ गई है, बांग्लादेश नहीं है टॉप 10 में, 12 में। अफगानिस्तान, आयरलैंड आर सीडेड टीम्स, दे आर नॉट मिनो है, मगर इतनी मिनो नहीं है। मैंने पहले ही कहा था आयरलैंड आप 3 T20 भेज दो इंडिया को भी, वो एक मार देते हैं अपने यहाँ, ठीक है ना। इंग्लैंड यार को भी यूएसए ने बाय द वे आयरलैंड को हराया है फोर्ट आई लॉटरडेल नो, में, तो तो आप यूएसए को भी इतना वो नहीं कह सकते कि मिनो है। तो यूएसए को होम एडवांटेज मिल रहा है, आई एग्री, मगर हम्म, यूएसए उसमें नहीं आती। यूएसए इसलिए क्वालिफाई हाँ, की क्योंकि इनका होम टूर्नामेंट है ना, वो टॉप हम्म, 15 में भी नहीं आती होगी यूएसए। वरना हम्म, यूएई ने मैंने तुम्हें बताया था लास्ट ईयर फुल स्ट्रेंथ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड को हराया हुआ यूएई में विद इन लास्ट 6 मंथ, और वो वर्ल्ड हम्म, कप भी नहीं खेल रही। तो हम्म, T20 में ना गैप कम हो गया है, तो हम्म, अपसेट होंगे। मगर ये कि हमारी टीम पे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ है प्रॉब्लम। हम्म, ये ओडीआई और एशिया कप से सेम रेपिटेटिव मिस्टेक्स हैं जो और ठीक नहीं हुई। अपसेट्स कंसिस्टेंटली हो रहे हैं ना। आप हाँ, अफगानिस्तान से सीरीज हार जाते हो, आप या न्यूजीलैंड से बी टीम से आप ड्रॉ करते हो, I mean, is it आप even an upset आयरलैंड से now? गेम हार जाते हो। Is it हो even गया an ना। upset now? Gussa is baat pe hai ki we are sitting here. We are nobody. Let me say this again. We're not great experts. We're nobody. We या can see all of this. We've been saying it. So या what the hell is the PCB doing? Why can't they see this? What the hell is the management doing? If राइट। anyone, if koi kutta bila dekh sakta hai, we're sitting here. We're nobody. We can see this. Why the hell can't they do anything about it? That's the problem. That's what makes me angry. या Right? चलें जी, इसके साथ ही वी विश के कुछ एक पॉजिटिव वाइब के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं आज, बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। सो नॉट वेरी गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ डैलस, बट अगेन जिस तरह आसिफ ने कहा कि दिस वाज द फर्स्ट गेम, तो लेट्स होप, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स होप के टाइम हमारे पास कम है, बट यू नेवर नो, पाकिस्तान बाउंस बैक होपफुली कर जाए। द इंडिया गेम वुड बी की, and then after that of course, उसके बाद दो गेम्स और भी हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। उस वक्त तक सपोर्ट करते रहेंगे पाकिस्तान को। उम्मीद है कि जो बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं वो उनके अपने ड्रेसिंग रूम में भी हो रही हो, एंड वी हैव And सम even if we lose to India, बेटर not lose by इन्वेस्टर्स। too much. गेम सॉरी। एक्सपीरियंस चाहिए I'm यार। saying if we lose to India, we need to make sure we don't lose by too much. या बिकॉज जो सिनारियो बन रहा है, अगेन अगर जो फॉर दोज ऑफ यू जो कि सिनारियोज वगैरह देखते हैं, जो रियलिस्टिक सिनारियो अब बन रहा है वो ये है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से हार जाता है तो देन वी आर डिपेंडिंग ऑन आयरलैंड बीटिंग यूएसए, एंड देन पाकिस्तान बीटिंग आयरलैंड, एंड देन नेट रन रेट पे बात आ जाएगी। एंड सिंस आयरलैंड बहुत बुरी तरह इंडिया से हारा है, अभी उनकी नेट रन रेट बहुत बुरी है। यूएसए ने हमें टाई किया था तो उनका हमारा नेट रन रेट बराबर है। सो नेट रन रेट पे बात आई तो हमारा फिर भी अच्छा चांस है। इट्स सैड कि हम इतना अर्ली टूर्नामेंट नेट रन की बात हमने स्टार्ट करी है, बट दिस इज व्हाट इट इज।
सो अगेन पाकिस्तान थोड़ी लेट स्टार्टर्स भी होते हैं, ये तो हमें नजर आया, लास्ट वर्ल्ड कप में भी था। बहुत दफा ऐसा हुआ कि फर्स्ट गेम वो हार जाते हैं। तो व्हाइल ऑब्वियसली वी डिसअपॉइंटेड, दिस इज नॉट अ कंप्लीट शॉक, बिकॉज हम तीनों जब बैठे हुए थे तो एक एंग्स्ट, एक एंजाइटी थी कल रात के ये कुछ अपसेट ना हो जाए। अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, बट लेट्स होप फॉर बेटर न्यूज नेक्स्ट टाइम। और कुछ कहेंगे जी आसिफ और मुदस्सिर? यार मैंने कहा था पाकिस्तान नहीं हारेगा, वो टाई हुआ है, हारा नहीं है, वो सुपर ओवर पता नहीं जबरदस्ती सुपर ओवर करा दिया यार, ड्रॉ हो गया था मैच। Clutching at चलिए जी, straws. ओके वेरी मच, अल्लाह हाफिज। Lapis. ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Lapis. Not bad. यार दो, या तो दो में कर लेते